2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368, 2025, 104. So, deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement, ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. Honorable Chairman, sir, we are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agents વિડિયો સામે આવ્યો છે તેને લઈને આખા ભારતમાં રોષ છે કારણ કે ભારતીયો સાથે જે અમાનવીય વર્તન કરવામાં આવ્યું છે જેને લઈને એક ભારતીય અત્યારે નારાજગી વ્યક્ત કરી રહ્યું છે, એક ગુસ્સો વ્યક્ત કરી રહ્યું છે કે કોઈ પણ દેશ દ્વારા ભારતીય સાથે આ રીતનું વર્તન તો જરા પણ સાંખી ન લેવાય અને આ જ લાગણી ક્યાંક સરકાર તરફથી આવેલા નિવેદનમાં પણ જોવા મળી છે. ભારતીયો પર આ રીતનો અત્યાચાર કેમ કરવામાં આવ્યો છે, અમેરિકાની આવી તે કઈ આડોડાઈ, એ પણ સવાલ અહીં વેધક રીતે પૂછવો રહ્યો અને જેને લઈને એસ જયશંકરનું નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે. એસ જયશંકર કે જે ભારત મુદ્દે કોઈ પણ મંચ હોય, વૈશ્વિક મંચ હોય કે રાષ્ટ્રીય મંચ હોય, તમામ જગ્યા પર પોતાનું સ્ટેન્ડ મજબૂત રીતે રજૂ કરતા હોય છે અને આ મુદ્દે પણ તેઓએ કહ્યું છે કે ગેરકાયદે રહેતા લોકોને અમેરિકાએ પરત મોકલ્યા, પરંતુ જે વર્તન હતું તે કદાપી યોગ્ય ન હતું. Whose names have come to me to make brief interventions up to 3 minutes. I call upon Shri Randeep Singh Surjewala. 3 minutes. शुक्रिया सभापति जी। मौजूदा विषय जो विदेश मंत्री जी ने उठाया, आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत मां का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। सर, 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी,
40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही। क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या यह व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? दूसरी क्लैरिफिकेशन, सर कितने हजार और भारतीय हैं? हमने वो तो देखे जो हथकड़ी और जंजीरों में बंधकर आए, हमारे भाई बहन और बच्चे, पर कितने हजार ऐसे भारतीय हैं 7,25,000 में से जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है, और उनके क्या हालात हैं और क्या उनको आपने काउंसलर एक्सेस दिया है? तीसरी क्लैरिफिकेशन सर, क्या अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाली, उनके गले पड़ने वाली सरकार ये समझती है कि ये सब 7,25,000 भारतीय इसलिए गए कि 2 करोड़ रोजगार बार बार हर साल देने का वादा करने वाली सरकार न रोटी दे पाई, न अच्छी जिंदगी दे पाई, और मजबूरन पत्नी के गहने रहन करके एक एकड़ जमीन बेचकर अपना मकान गिरवी रखकर ये लोग वहां गए? अब इनके बारे में सरकार क्या करेगी? चौथी क्लैरिफिकेशन सर, I'll close it then. Thank you. क्या सर, ओनली लास्ट क्लैरिफिकेशन, जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? तब जब 1993 में जब हमारे एक डिप्लोमेट के साथ, सर एक लाइन सर, वन लाइन सर, You made your point. सर वन लाइन, Sorry. विद ड्यू रिगार्ड देखिए, सर, जस्ट वन लाइन। second. I made a departure, Yes. believing in everybody's commitment. Sir, I Sorry. defer to everything. Tiruchi Shiva. Sir, No, just one nothing, line no, and- no, no. No. Sri Tiruchi Shiva. I will not. Please, take your seat. You have never done. For a change, obey the chair. Please, for a change. It will be the first of the kind from Sri Tiruchi Shiva. Please. Tiruchi ji, nothing is going on record. Sri Tiruchi Sharma. Sri Tiruchi Shiva. Thank you, Chairman, sir. What is this? You are a senior man and still doing it. Can there be a more abuse of a privilege extended? Thank you, Chairman, sir.